this is Mansi Tipure, and I'm going to start a new course related to C++. And of course, people will think why it is very important to learn C++ in the era of AI, machine learning, and more advanced technologies. But we will discuss the C++ language and why it is important, how it is important, and where it is used by so many people. Still, the use of C++ is necessary, and there are few more things we will learn about the C++ programming language. So first of all, we will learn about कि why it is important. तो सबसे पहले हम इसका introduction देंगे. Like this is the introduction of C++ programming language, and we will get to know the applications, why it is still important, how it stands apart from other programming languages, especially in competitive programming, building high security, high speed computing applications. And we will learn more important part of C++, that is STL, standard template library. So यहाँ पे we will learn कि यहाँ पे why we are using the C++ programming language. ठीक है, तो why we are learning C++ programming language. First of all, इसमें जो security provide करती है ये language. If we are building any application using this language, it will provide a lot of security. And the next most important feature of C++ programming language is that it provide high computing speed as compared to other programming languages. The reason is that why it is used in competitive programming. Now people think कि competitive programming क्यों important है in the era of AI and machine learning and all the advanced programming languages. The thing is, the most important part the competitive programming and algorithm and DSA will play is cyber security. In case we wanted to do some kind of ethical hacking and to build something which will help us to build algorithms are still built by human beings, not AI, and it is used like cracking the code is very important for ethical hacking. Now we will learn the importance of C++ programming language, and secondly कि क्या features हैं जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अलग दिखाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि पाइथन इटसेल्फ इज़ मेड यूजिंग C++. द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज MATLAB is building using C++ programming language, and so many programming languages are itself built using C++. The most important features of C++ is, firstly, it is stable. It provides stability to the program. Second thing is it is portable. पोर्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? पोर्टेबिलिटी मतलब होता है कि सपोज वी हैव क्रिएटेड एनी एप्लीकेशन, या हमने कोई भी छोटा सा प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे यूजिंग C++. ठीक है, अब ये C++ लैंग्वेज जो है विंडोज़ में भी कंपेटेबल है, उबंटू में भी कंपेटेबल है, और क्रोम OS में यूज़ कर रहे हैं तो क्रोम OS में भी कंपेटेबल है. इफ़ यू वांटेड टू रन इट इन लिनक्स उसमें भी कंपेटेबल है. इफ़ यू वांटेड टू रन इट इन मैक OS इट इज़ कंपेटेबल. सो इफ़ वी हैव क्रिएटेड वन प्रोग्राम और वो प्रोग्राम हमको किसी और सिस्टम में रन करना है, सो वी विल बी एबल टू रन दैट प्रोग्राम in other systems also. Secondly, the thing is that most of the libraries are also built in C++, and most of the tools also built in C++ programming language. The most important reason why it is built using C++ is that its computing speed. कंप्यूटिंग स्पीड मतलब कि इट इज़ फास्टर, एंड सेकेंडली इट इज़ मेंटेनेबल.
And the third thing is like it is we can say that it is less cost, it requires less cost, and secondly less efforts. And the compiler is open source, the C++ compiler is open source, and it is available for everyone. Okay, and this is the most important part of C++ programming language: why, how, where it is useful, and what role it plays while building the application using the C++. Then the next part is, if we are building a C++ programming language using command line tools or any IDEs, the extension will be .ccpp, and after execution we will create two files. One file will be object file and the another one will be the executable file. ठीक है, तो इसको यूज़ करके वी विल बी एबल टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स जो हम इन सारी चीज़ों को यूज़ करके बनाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे हम एक और चीज़ क्या देखेंगे, वी विल लर्न इज़ लाइक कि सबसे इम्पॉर्टेंट एंड टफेस्ट थिंग in C++ is, and which is mostly used in CP, that is competitive programming, is standard template library, that is STL, जिसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती है. और द डिफरेंस इज़, what is the difference between STL and what is the difference between normal libraries or any programming language, like any program built using C++ is that कि यहाँ पे we can execute program for large amount of data. और यदि हमारा डेटा सेट स्मॉल है एंड वी वांटेड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम फॉर स्मॉलर अमाउंट ऑफ डेटा, वी विल यूज सिंपल C++ लैंग्वेज विदाउट यूजिंग द STL. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, वी विल लर्न कि यूजिंग STL वी कैन इवन एग्जीक्यूट DSA प्रॉब्लम्स, वी कैन ऑल्सो क्रिएट द एल्गोरिथम, and we will be able to perform some operations also. Like C++ का रोल सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं है, इसका रोल हार्डवेयर डेवलपमेंट में भी है, हार्डवेयर एक्सेस लेने के लिए भी होता है, एंड सो मैनी एप्लीकेशंस आर ऑल्सो बिल्ड यूजिंग C++ इन फॉर हार्डवेयर. ठीक है, तो यहाँ पे सपोज वी वांटेड टू परफॉर्म सम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, वी वांटेड टू परफॉर्म और क्रिएट सम कंटेनर्स, and we wanted to create some algorithm. So C++ is the best language because of only one important feature, that is high computing speed, and the application built using C++ is highly secure, highly portable, and highly stable. So in this way we will be able to learn that why we are able to learn the programming language, that is C++. Thank you.